आज का जो वीडियो होने वाला है टोटली बिगिनर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। क्योंकि हर कोई हाई एंड प्रोडक्ट लेके अपना मेकअप करने नहीं बैठता है, एंड स्पेशली अगर टीनेजर्स को बोले या स्कूल गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स को बोले तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 3000 5000 का मेकअप लें। सो उसी के लिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड्स लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच इंटरेस्टिंग chatty hauls, videos, tutorials, blah blah. So let's get into the video. So सबसे पहले I'll use this Swiss Beauty का highlighter plus primer. This is a bomb primer and highlighter both. This is also affordable and ये आपकी स्किन को इतना ग्लोई बनाता है। मैक्स ड्रॉप क्रीम की ड्यूब तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ उसका एक लेवल डाउन है, बट इट्स स्टिल टू गुड. You can see the result, live result. Then I'll take this Insight Pro Concealer Palette. It has all the shades for bronze contouring and then concealing, corrector, and these all are concealer shades. So I'm taking the orange color corrector because मुझे बहुत ज़्यादा अभी dark circles और थोड़ा scars forehead पे हो गया. So for that I'll use this corrector, orange color corrector, and will blend it. आप चाहो तो इसे स्किप करके डायरेक्ट आप लोग कंसीलर लगा सकते हैं पहले, जो कि आपके स्किन टोन से एक शेड डार्कर होगा. अदरवाइज अगर आप अपने ही स्किन टोन का या लाइटर लगाओगे तो नहीं हो पाएगा. क्यों? वो हम कंसीलर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो भी स्कार्स है या पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं वो कंसील हो जाए. सो या Then I'll take a beauty blender and blend it with a very light hand. Then आपको सेम पैलेट में से आपके स्किन के शेड का एक कंसीलर लेना है. Here you go. And जहाँ पे भी आपने करेक्टर इस्तेमाल किया है वहाँ पे आपको इसे लगाना है ताकि करेक्टर और फाउंडेशन मिक्स होके ग्रेइश ना बने. अदरवाइज इट विल लुक ऑरेंजिश और ग्रेइश और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप उससे भी कंसील करें, अदरवाइज यू विल ruin योर बेस. Apply this foundation of Maybelline Fit Me in the shade 128. Then I'll take a flat blending brush. Will take it on my brush and apply it all over my face. This Insight HD concealer. It is a bomb concealer. It is very high coverage and also very easy to blend. I love this concealer. Insight lipstick in the shade 827 Shoot Up Pink. You must be wondering how this glow comes from. So go after this video, watch your shorts जो कि अभी तक अपलोड हो चुका होगा या maybe not. So do watch that. वो एक hack है जिसको मैंने try किया and I got this. So please do watch that. I'll set my base with this Insight HD translucent powder. First of all, I'll blend my under eyes so it doesn't get creased. Then I'll apply
the rest on my rest areas. The glow is still there, so don't watch that. Don't ignore my face. I'm looking like a cartoon right now, but it's fine. Everything is gonna worth it at last. Now let's start our eye makeup. Taking a concealer on back of my hand, then मैं इसे लूँगी अपने brush पे, and I'll draw a line under my eyebrows. If I forgot to mention, the concealer of Insight was also affordable. Every product I'm using in this is less than 300. Isn't it too perfect? Then I'll take a light brown shadow to fill my brows. Then I'll take my favorite lip liner. This is my favorite lip liner from Swiss Beauty in the shade chocolate, dark chocolate, sorry. Then I'll draw a winged kind of thing from here to here, and I'm blending it with a blending brush. Taking this brush and blending it. Then I'm taking a black shade and I'll draw a very thin line here. A seamless line. See, I've just drawn a line and it is giving the, you see? I've just draw a line, and when I open it, it is giving a shade like that. Applying a little dark brown shade on my lower lash line. Very, very light. I'll apply this mascara from Lakme. This is my favorite mascara. Now I'll top it with Mars powder highlighter. Swiss Beauty highlighter in the shade 02. It has a rose gold kind of shade. So here's my lashes on. Now it's time to apply lipstick. Now I'll apply this Swiss Beauty lipstick. Now I'll apply MAC Fix Plus setting spray. अच्छी लगी और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so you won't miss any update. Till then, stay safe. Bye bye.